अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप you're all well। आज मैं आपके लिए ये रियल ब्राइड का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, तो देखते रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे किया। So I've got a real bride tutorial for you today, and I'm going to show you exactly what I did to create this bridal look. So this was my beautiful bride, and she trusted with me both days, her walima and her barat. So we started off with the eyebrows. I'm using the Be Perfect brow wax, so I'm just combing through the hairs and really lifting them up, because these days I've been using a lot less products in the eyebrows now and just using this brow gel, which is really nice. सो यहाँ पे मैंने ब्राउ जेल इस्तेमाल किया। ये वैक्स है जहाँ पे आप बालों को थोड़ा सा वो स्टिकी सा कर देते हो एंड इनको शेप ले आते हैं। आजकल मैं ब्राउज से डिफरेंट कर रही हूँ एंड थोड़ा सा लेस प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो हार्शनेस ना आए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे मिक्स करके स्पूली से एंड देन ऊपर से जो है शेप लेके आ रही हूँ एंड देन थोड़ा थोड़ा इसमें NYX की जो ब्राउ जेल है वो इस्तेमाल करूँगी थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। सो बहुत कम लाइक ब्राउ जो पॉमेड होता है, जो जेल होता है, वो यूज़ कर रही हूँ। So what I've done is I've used the brow wax and then now I've set it into place, and then I'm using the NYX brow mascara, which it's the chocolate colour. So I'm only using a little bit of this just to give the hair a little bit more definition and a little bit more colour and depth to it. And then what I'm going to do is just use my pomade and just add in a little bit of product on the ends where I need it and lengthen the eyebrows a little bit. सो थोड़ा सा NYX का वो मस्कारा इस्तेमाल किया है जहाँ पे थोड़ा सा कलर आ गया, आप देख सकते हैं थोड़े से आईब्रोज डार्क हो गए। फिर उसी को यूज़ करके तो थोड़े से ब्राउ के स्ट्रोक्स बना रही हूँ एंड थोड़ा सा आईब्राउ को थिक कर रही हूँ साइडों से एंड थोड़ा सा लेंथ भी दे रही हूँ। सो इससे थोड़ा सा ये है कि इस टेक्निक से थोड़ा सा ना वो हैवी आईब्राउ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने पी लुइस का बेस इस्तेमाल किया है एंड ये है रूमर 3। सो ये कलर एक्चुअली मैं नॉर्मली नंबर 1 यूज़ करती थी, लेकिन वो काफ़ी लाइट था, लेकिन वही उस टाइम पे मेरे पास था। अभी मैंने ये लिया और मुझे ये कलर एक्चुअली पसंद है क्योंकि थोड़ा सा और मिलता है स्किन टोन के साथ। सो ये वाला मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। So I'm using the P. Louise base Rumour 3, and this shade, as you can see, is darker than the one that I normally use, and I actually prefer this because the other one I was using because I had it and it still worked, it was absolutely fine, but I prefer using this colour. So number 2 and number 3 I've got now. So I'm just patting this on with a flat brush and I'm just adding it on, carved out the eyebrows and then patting in the product, and then I'm going to go around the eyebrows at the top as well and really carve out that eyebrow. And then you want to blend this product away as well because you don't want it to set there. So बेस मैंने लगाया एक फ्लैट ब्रश के साथ, इसको पैटिंग मोशन से ऊपर से थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूंगी। फिर ऊपर से आपने देखा है कि अपनी ब्रश की शेप से मैंने उसको कार्व आउट कर दिया ऊपर से भी। एंड देन जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसको सारा कुछ मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश से, बस आईब्रो ब्रश आई शेडो वाला, एंड इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ क्योंकि फिर यहाँ पे कोई हार्श लाइंस ना रह जाए। सो ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उस सारे को मैं पैड कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। So I'm just buffing away any extra product I've got there, making sure I'm tapping the product in so that I don't want it too wet, but I do want it quite wet as well. So I've gone in with the new Huda Beauty Empowered palette and I'm just going in with that shade there, and I'm just going to start dabbing the colour on because I just want payoff on the outer and inner corners of the eyes, and then I'm going to join this up and blend it. So you could just do it on the whole eye as well if you wanted to, so if you didn't want to completely copy what I'm doing, that's fine as well. You can still achieve the same look. सो यहाँ पे मैंने ये कलर लिया है ब्यूटी की पैलेट से, कोई भी ऐसे जो कलर है आपके पास आप यूज़ कर ले। आउटर एंड इनर कॉर्नर पे पहले लगाया एंड देन जब मेरा कलर सही हो गया तो इन दोनों लाइंस को जॉइन कर दिया। सो हल्के हाथ से इनको मैं ब्लेंड की जा रही हूँ भी। So then I've gone in with this slightly orangey shade because I felt like in reality it was just looking a little bit dull to me, so I just wanted to brighten it up in the transition area. So I just started adding this lighter colour in, which gave it a slightly orangey tinge to it. So थोड़ा सा डल लग रहा था, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन जो एरिया है वहाँ पे मैंने ये दूसरा कलर यूज़ किया। ये थोड़ा सा ऑरेंजी शेड मुझे चाहिए था कि बहुत ज़्यादा डल ना लगे। ये ट्यूटोरियल है काफ़ी लेंथी एंड डिटेल वाला है, सो प्लीज़ देखते रहे और हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो क्योंकि मैंने वो एक कलर लगा लिया था जो बेस पे था ना, वो थोड़ा सा हट गया था, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा वापस लेके जो पहला कलर था वो आईज पे दोबारा लगा रही हूँ।
So because I did the transition colour, I've just gone back in with some of that first colour just on the eyelid as well. Now I'm adding some highlights. So this was actually the Kashees palette. It's just like a shimmery colour. Now here it looks like it's a bit dark, but if you look at when I do the other eye, it's just shining. It just depends what the lighting is like. So I just highlighted the brow bone a little bit. सो ब्राई बोन को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया. एक साइड पे आप देखेंगे इस साइड पे कि थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन वो बस लाइटिंग की वजह से दूसरी आई पे नहीं लग रहा था. ये काशीज़ के पैलेट से एक शिमरी सा गोल्ड मैंने लिया था. वही गोल्ड लेके फिर मैंने आईलिड्स पे भी लगा दिया ना. नॉर्मली मैं फिंगर से ये लगाती हूँ, एंड नॉर्मली अगर ये काशीज़ का यूज़ कर रही हूँ तो उनका बेस भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने बस ऐसे ब्रश से लगा लिया था. लेकिन फिर मैंने एक और गोल्ड लगाया था, सो इसलिए मुझे इतना वो नहीं था कि मैं कोई बेस वगैरह लगाऊँ. So I've gone in with the same gold from the first palette that I used, which was the Kashees palette that I used underneath the brow bone. So I've added this in with the brush, and you can see I'm just putting it on. I normally use my fingers for this bit, and sometimes if I'm using the Kashees palette, I will use it like a base. But I was going to use the golds from the Huda Beauty palette anyway, so I just left it like it was. So I'm just using my fingers here, tapping it in, and then what I'm going to do is just either side again, build up the socket area again, just to blend it out properly. So फिंगर से मैंने ये गोल लिया है द ब्यूटी पैलेट से, एंड देन जो मैं हमेशा जब ऐसा कोई शिमर लगाती हूँ इनर एंड आउटर कॉर्नर्स जहाँ पे मैंने किया हुआ है वहाँ पे थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर दी थी. ये मैंने अर्बन डिके का हैवी मेटल ग्लिटर लिया है, थोड़ा सा सेंटर में इसको थोड़ा सा पॉप देने के लिए, तो वो लगा दिया था. So just in the center of the eyes, I've used a little bit of the Urban Decay glitter, heavy metal glitter, which I absolutely love, and I've just used that right in the middle of the eyes, just to give it that slight pop of sparkle there. And then here I'm just blending out the inner and outer corners, because I don't like it when you add your glitter and you don't blend that. So then I've just gone in with a very flat brush, and I'm just creating like a black line with some black eyeshadow now, just to give the eye some depth. सो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए आईलाइनर इतना ज़्यादा हम नहीं लगा रहे थे, सो मैंने ब्लैक आई शेडो से जैसे एक लाइन सी बना दी थी, एंड बाद में जब आई लैशेज़ वगैरह लगाऊंगी एंड ब्लेंडिंग करूँगी तो वो उसका एक थोड़ा सा अच्छा सा डीप सा इफेक्ट आ जाता है. मेरी ब्राइड को काफ़ी हैवी आईज चाहिए थी, ब्लैक आईलाइनर, हैवी बेस, हैवी आई लैशेज़ वगैरह, तो वही करी थी उसके लिए. ये मैंने यहाँ पे ग्लो रेसिपीज़ का ड्यू ड्रॉप्स यूज़ किया है एज हाइड्रेटिंग, एंड देन माय मॉइस्चराइज़र. प्राइमर लगाया था, लेकिन इधर ही लिखती है प्राइमर, लेकिन प्राइमर मैंने थोड़ी देर बाद लगाया था क्योंकि मैं भूल गई थी. So I'm using the Glow Recipe Dew Drops, and then I went in with my moisturizer, my primer. I actually forgot to add on. I have listed it before, but I put it on in a bit. So I'm just color correcting with the the foundation palette from Makeup Forever. So I'm just using a slightly orangey toned color, and I'm just correcting in all the areas that I feel I need correction. But I'm just using a brush, not using a lot of product. And then you'll see that in a second. I actually forgot that I had not used my primer yet, so I added that in afterwards. So यहाँ पे मैं भूल गई थी, प्राइमर नहीं ऐड किया था, तो मैं यहाँ पे अपनी कलर करेक्टिंग कर रही थी. फाउंडेशन पैलेट यूज़ किया मेकअप फॉरएवर का जो नॉर्मली करती हूँ, फिर याद आया था, सो यहाँ पे मैंने अपना प्राइमर लगा दिया था एल्फ का. So really rubbing this in. And then the waterline I just went in with black gel liner. So the Glow Recipe Dew Drops I've been using a few times. I love those products. It's really, really nice, but I do think it's just too expensive. There's not much product that you get. And I just think it's a lot of money to be spending on that amount of product. So it's not something I think I'll be personally buying again, because I just found it really, really expensive and hardly any product in there. But the product itself is actually really, really nice. So I use my Halo Glow from e.l.f. and then I'm going in with Krylon Paint Stick, and I'm just putting this on all over the face, and then I'm going to add my NARS foundation on top of it. So मैंने पहले हेलो ग्लो फिल्टर यूज़ किया है जो एल्फ का है, बस थोड़ी सी ग्लो के लिए. एंड देन मैंने यहाँ पे क्राइलॉन की पेंट स्टिक इस्तेमाल किया है, पूरे ऑब्वियसली फेस पे मैंने लगा दिया
नाज की लॉन्ग वेयर फाउंडेशन ऊपर लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश से एंड साथ साथ अब ब्लेंड किए जा रही हूँ। सो ये कलर जो था मेरी ब्राइड बाद में जब वलीमे पे गई थी तो उसने बोला था कि बेसिकली उसके लिए थोड़ा सा ये शेड थोड़ा सा डार्क था, थोड़ी सी ऑक्सीडाइज भी हो गई थी, लेकिन हालांकि यहाँ पे फिर भी लाइट लग रही है। मैच की थी लाइक नेचुरल स्किन टोन से, लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल लाइटिंग में, लेकिन फिर भी उसके लिए ये फिर भी थोड़ी सी डार्क थी उसके लिए। सो ऑब्वियसली आपको अपनी ब्राइड की सुननी पड़ती है एज वेल एंड बैलेंस एक लेके आना पड़ता है। सो मैं ब्रश से ही इसको सारा कुछ अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। सो आई अप्लाई दिस द नाज फाउंडेशन ऑन टॉप एंड व्हेन आई यूज़ माई ब्रश I'm blending away both products and then I go in with my damp beauty blender and really dab away for quite a while and blend everything out. Now everything matched up with her, but when I did go back to do the Valima day, she did say that she wanted to be a little bit lighter than she was on this particular day, even though obviously you guys sometimes when you watch my videos and say, you know, the foundation was too light, we had actually matched up. I had actually, in the natural lighting, I did it. In this lighting, it always looks a little bit lighter and brighter, but obviously it just goes to show that, you know, I have to balance things. You have to listen to your bride as well, and do it accordingly. So I'm going in with my Tarte concealer now. I've used a medium tone on the outer areas here, and then on the inside I'm going in slightly brighter. Tarte का कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आउटर एजेस पे जो थोड़ा सा मीडियम शेड दिया था, इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लाइट दे रही हूँ, एंड देन यहाँ पे एक लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने पिंकी सा टोन था इसको पहले मैंने ऐड कर दिया। So I'm just using my cream blusher here, which I do like doing. So I add it on. I'm not adding it on very, you know, it's not even at the moment. I will add on more, but when I've blended out my concealer, that's when I go back in and add in dabs wherever I need to. So I'm just using my Real Techniques brush and really pressing that product in now. So I'm taking my time and taking it upwards so it lifts the face a little bit, and then slightly out into the blusher as well, and that's what gives you that nice blend as well. So really take your time here. So यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया हुआ ओबियसली, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपने लगा के तो इसको आपने ब्लेंड करना है, काफ़ी देर के लिए मैं करती रही हूँ। फिर एक पाउडर पफ से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मेकअप सेट कर लिया, लोरा मैसियर का लूज़ पाउडर यूज़ किया, एंड देन बेकिंग करती हूँ। इस स्टेप को ना स्किप करें, नहीं तो आपका सीरियसली मुझे लगता है मेकअप केकी हो सकता है। So I'm setting with a powder puff and a little bit of Laura Mercier powder all over the face where I need to. So, and then I go in with my baking. I would say do not avoid this step. And if you think your makeup goes cakey and you don't do your products like this or in this manner, try this step, because I think it will make a difference. If you go in straight with your baking, I think it really gives you a cakey finish. So now I've gone in with my baking. I've added my Huda Beauty powder, which is the pound cake, and then I'm just doing a little bit of contouring with the Kashees palette, and then I'm gonna blend away the extra powder. So यहाँ पे मैंने Huda Beauty का pound cake जो है पाउडर इस्तेमाल किया, बेकिंग कर रही हूँ, फिर थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। काशीज़ का जो पैलेट मेरे पास पड़ा है वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो वो मैंने यूज़ किया है। एंड यहाँ पे नोज़ पे थोड़ा सा कई दफ़ा वहाश हो जाता है, तो पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मैक स्टूडियो फिक्स का। So I'm contouring the actual nose with my MAC Studio Fix, because sometimes I find that when I use contour powders, they're quite heavy and quite dark and they don't blend as well. And they look a bit harsh for me. Now I've gone in quite heavy with my contouring here. For me this is quite heavy, but even the picture still it wasn't. I probably could have done a little bit more if I wanted to as well, but I prefer to keep it like this where it's a little bit more natural. Underneath the eyes I'm just going in with a very light brown colour from my Kashees palette. So this is when you smoke out your eyes, and then the powder underneath will catch the fallout, and when you brush that away it's all nice and clean. So इस स्टेज पे आपने हमेशा अपनी अंडर आई के मेकअप करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि नीचे इतना पाउडर लगा हुआ है, लेकिन जब आप पाउडर हटा देते हैं, ऐसे बफ़ कर देते हैं, तो फिर उसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अगेन अपने दोनों जो मैक स्टूडियो फिक्स है एंड ब्रश फिल्टर जो है शार्लेट टिलबरी का, वो दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। So I've used my MAC Studio Fix and I've used my Charlotte Tilbury Airbrush filter powder, mixed them and just wiped everything away, dabbed it away. Now I'm using my Kashees blush palette. I need to get a few more blushes actually, but I do really like this palette. So I like the fact that it gives you a slight shimmer as well. So at the moment this is what I'm using currently.
सो काशीज़ का जो पैलेट है वो मैंने इस्तेमाल किया। ब्रशर यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन है, वो बाद में मैंने ठीक कर दिया था। मैं जो बिल्कुल ओबियसली बिट्स कई दफ़ा आपको लगेंगे मैंने सही नहीं किए, लेकिन मैं एंड पे हमेशा उसको ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को मुझे लगता है टाइम चाहिए होता है। एंड देन सामने जब आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ तो अवॉइड करने के लिए कि सामने ना हो, तो आई नीड टू कि मैं सामने आके देखूँ। एंड देन नॉर्मली जब मैं बाल करती हूँ उस टाइम पे जो आपको नहीं नज़र आता, उस टाइम पे मैं सारा कुछ ठीक करती हूँ। So obviously at the moment the brush is looking uneven and things like that, but I'm just explaining that I do go through everything afterwards, normally off camera when I'm doing the hair and things, because at the moment I'm trying to avoid coming in front of the camera too much. And then obviously I will go and, you know, blend anything out, perfect the lips, because when the lips are wet as well, I don't correct them all at that point. I let them dry and then I correct them. So lipstick was a mixture of about 3 different colours, which I have listed here. So I go in with a darker one first, and then I start gradually bringing in the colour lighter by lighter, and that creates a lovely lip colour. So 3 लिपस्टिक्स यूज़ किए थे, एक लाइट थी, एक डार्क, एक मीडियम। सो डार्क से शुरू करती हूँ एंड देन मीडियम एंड देन लाइट बिल्कुल बीच में लिप में। सो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली डिटेल ट्यूटोरियल था, रियल ब्राइड थी ये। सो आई होप आपको पसंद आया। प्लीज़ कमेंट्स में भी कुछ छोड़ देना कि आपको पसंद आया कि नहीं। एंड ऑब्वियसली कोर्स भी इंशाल्लाह आ रहा है, उसको भी आप लोग फॉरवर्ड करें, और आगे से मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्राइड कैसे लग रही थी। एंड और ट्यूटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहे हैं। So I hope you enjoyed this tutorial. I have got another video that you can see of this bride as well. If you're not following me on Instagram, do so, please. And obviously leave a comment, and inshallah I will see you all guys soon. Take care, Allah Hafiz.